Hello IGNOU learners and a very warm welcome to all of you on this channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MEG 05 that is Literary Criticism and Theory का previous year paper that is the term and examination question paper of June 2021. So this is the most requested video so far because students find this paper a bit tricky and a bit complex and complicated to attempt and understand. But to much of a surprise, this time in June 2021, the paper was on the simpler side. It was an easy paper overall. अगर बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, इवन लास्ट मोमेंट में भी अच्छी तरीके से पढ़ा है, तब भी वो पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे. So let us begin with the paper discussion and the paper analysis of this particular paper. So सबसे पहले अच्छी बात ये थी that there was a choice. We need to attempt any of the 5 questions from these 7 questions and ये 7 questions भी बहुत ही direct and बहुत ही easy थे. So first question पूछा हुआ था about Plato. So comment on Plato's views on poetry. So this particular question was taken from the classical criticism. So वो वाला जो ब्लॉक है हमारा MEG 05 में वहां से ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस. हम सबको पता है अगर हमने क्लासिकल क्रिटिसिज्म अच्छे से पढ़ा हुआ है देन प्लेटो was an ancient Greek philosopher who was against poets and poetry. He had an hostility towards art in particular and he used to condemn poetry and any of the arts. So he has basically said in his Republic, in his theory of imitation and art, that is his theory of mimesis, he has given his views and arguments regarding to his condemnation and his critique of poets and poetry. So we have to write about the different point of views of Plato, that how he has condemned poetry, how he is against poetry as an art, and particularly he's against poets and he has banished both poets and poetry from his Republic, that is the most of the renowned work of Plato. So on educational viewpoint, philosophical and moral viewpoints, so all these views have to be clubbed and then written in this particular answer. Now the next question was about romanticism. Attempt a critique of romanticism. So this was also one of the most direct questions. इसमें सबसे पहले हमें romanticism के बारे में बताना है. We can also add few details and characteristics of romanticism and what are the things that led to the critique of this particular movement, that is romanticism. Now next, third is honest criticism and sensitive appreciation are directed not upon the poet but upon the poetry. Comment. So सबसे पहले ये वाला हमें statement को analyze करना था that this particular statement ये कहाँ से ली हुई है, किसने बोली है, कौन से reference में है. तो उन सभी चीज़ों को हमने इस क्वेश्चन में बताना था और इस स्टेटमेंट को बेसिकली हमें जस्टिफाई करना था और कमेंट करना था. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट मार्क्सिज्म. How do Marxists understand literature? Support your points with suitable examples. See, this particular paper, examples and arguments, these are the two things that are necessary to attempt this particular paper and to score good marks as well. So इस question में हमें examples के साथ बताना है that how Marxists understood literature basically. So हमें वो सारी arguments, हमें वो सारे points analyze करके और critical analysis उन सारे points का लिखना था जिसमें हम ये बताएंगे that उनकी क्या समझ थी, मार्क्सिस्ट्स जो थे उनकी क्या समझ थी of literature. Now the fifth one was about feminist criticism, that is about Mary Wollstonecraft, who has actually started the feminist criticism per se.
सो इस क्वेश्चन में हमें उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना था, दैट assess the contribution of Mary Wollstonecraft to the emancipation of women. So basically a vindication of rights of women, जो उनका जो टेक्स्ट था, उनका जो ऐसे था, उसको रेफरेंस में लेकर हमें ये वाला क्वेश्चन बताना था, दैट व्हाट वाज हर कंट्रीब्यूशन फॉर द emancipation or emancipation of women basically. So this is also a set of arguments and how she has justified about the emancipation of women. So वो सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में बतानी. Sixth question was from the from the psychoanalytical approach, that is evaluate either Freud or Lacan's contribution to the understanding of literature. So basically साइको एनालिसिस वाला जो हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जो हमारा लास्ट ब्लॉक रहा है इस पर्टिकुलर पेपर में, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था. एंड साइको एनालिस्ट जो सबसे ज़्यादा फेमस एंड मोस्ट रिनाउंड हैं वो सिगमंड फ्रॉयड एंड जॉक लकान ही हैं. तो उसमें से ही हमें इन दोनों में से कोई एक को, किसी एक के कंट्रीब्यूशन को हमें बताना था, दैट व्हाट वाज Freud's understanding of literature and what was his contribution, or Lacan's contribution to the understanding of literature. Now the seventh one was also on a simpler side. कई बार ऐसा देखा जाता है that short notes, कई short notes बहुत ही ज़्यादा in depth and complex आ जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है that short notes अगर हमें attempt करना है तो हम कौन सा शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करें. बट ये पर्टिकुलर जो पेपर है, दैट इज जून 2021 में, शॉर्ट नोट्स बहुत ही इजी थे. कोई भी हमें शॉर्ट नोट्स, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे पेपर में, और वो भी सारे के सारे जितने भी पूछे गए थे मोर और लेस सभी इजी थे. कोई भी शॉर्ट नोट हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे. So first short note is about Rasa, then Ossetia, then Hamartia, then death of the author, and last is Matthew Arnold as a critic. So इसमें से रासा, ये वाला जो शॉर्ट नोट है, ये हमारे असाइनमेंट में भी पूछा गया था. तो अगर असाइनमेंट आपने अच्छे से किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये भी कर सकते थे. हमार्शिया जो एरिस्टोटल ने बताया है, दैट हमार्शिया इज द ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ द ट्रैजिक हीरो, जो उन्होंने अपनी पोइटिक्स में बताया है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. उसमें से हमार्शिया लिया हुआ है, दैट व्हाट इज हमार्शिया, दैट इज अ ट्रैजिक फ्लॉ बेसिकली. सो उसके बारे में भी हम लिख सकते थे. इवन डेथ ऑफ द ऑथर, ये भी असाइनमेंट में पूछा गया था. सो दैट इज ऑल्सो one of the repetitive questions that has been asked even in the question paper. So death of the author, that is Roland Barthes का जो essay है, most renowned essay, death of the author, उसका उसके व्यू पॉइंट्स एंड उनकी आर्ग्यूमेंट्स भी हम इस वाले क्वेश्चन में लिख सकते थे. सो ओवरऑल द paper analysis of this particular paper, that is MEG 5 of June 2021, was very easy. So it is one of the easiest papers so far, according to many of the students and many of the teachers as well. So काफ़ी simple paper था. Hopefully ऐसे ही इस तरह के paper pattern आगे भी देखने को मिलेंगे. So this was about this particular paper, that it was on a easy and a simpler side. So this brings to the close of today's video. If you liked it and found it helpful, then do click the like button, share, subscribe, comment, and keep supporting to this channel. All the best to you, and thanks for watching.